let us begin with the session today. And the session, like I said, if you're planning a start, that starting point, एक नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं और इस साल में अगर आप अपनी फैमिली को बढ़ाने की सोच रहे हैं, if you're planning a pregnancy, if you're planning to conceive, then this is the session for you. Okay, so let me introduce our panelists for today, Dr. Deepika Agarwal. A very, very warm welcome to Dr. Agarwal. She is an internationally trained lead obstetrician and gynecologist, and she's one of the most trusted and esteemed gynecologists in Gurgaon. She's based in Gurgaon, but I can guarantee you that her fame travels far and wide. She's got 23 years of clinical experience, including 13 years of enriched experience in various NHS hospitals in London, including Surrey and Sussex Healthcare, Whittington Hospital, Queen Elizabeth Hospital, and, far and wide, like I said. And she is one of the most trusted, doctors when it comes to planning on conception, pregnancy, first time, second time. So we are really, really honored to have you. Thank you so much, Megha. I think it gives me immense pleasure to be with Onlymyhealth, and on such a big platform all over India. This is one topic, planning pregnancy or planning how we should plan ourselves when we want a child. It's very close to my heart. And I'm so pleased कि आज all over India से लोग इसको सुन पाएंगे और वो इसको सुनने के बाद एक right step, एक right decision ले पाएंगे, क्योंकि लंदन से इंडिया मैंने 3 साल पहले मूव किया और मैं यहाँ देखती हूँ कि women are very confused और they don't know the direction कि क्या करें, किस age पे करें, कैसे करें. So I think without delaying, I'll start on this. जो आज के सेशन में मैं कवर करूंगी, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, आज फिटनेस का डे है. वी आर टॉकिंग, यू विल बी हियरिंग 7 पैनलिस्ट कि कैसे हम अपने आप को फिट रखें. तो मेरा फर्स्ट टॉपिक आज होगा प्री कंसेप्चुअल हेल्थ, हमें कैसे मेंटेन करनी है. और चीज़ें जो मैं आज डिस्कस करूंगी, इट्स लाइक हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, हम किस एज तक प्रेगनेंसी प्लान करें. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर किसी के लिए. हर वुमेन आजकल कंफ्यूज्ड रहती है क्योंकि सब करियर ओरिएंटेड है, सबका करियर है. बहुत एजुकेशन आजकल सबको मिलती है, 25-26 तक तो हम एजुकेशन ही लेते रहते हैं. फिर मैं कवर करूंगी एम आई फर्टाइल और एम आई सब फर्टाइल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. हम इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. हम पार्टनर की हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्रेगनेंसी इज अबाउट 2 people कमिंग टुगेदर. फर्टाइल डेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और अगर हमें कोई मेडिकल कंडीशंस प्री एग्जिस्ट करती हैं तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं. सो लेट मी स्टार्ट नाउ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्री कंसेप्चुअल हेल्थ, कि कैसे हमें मेक श्योर करना है, क्या हम कर सकते हैं बिफोर वी आर प्लानिंग प्रेगनेंसी एट एनी एज ऑफ आवर लाइफ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज about healthy diet and the vitamins that we are taking. Now when I talk about vitamins, सबसे पहले एक बहुत important vitamin होता है folic acid, जो हमें pre-conceptually शुरू करना चाहिए. Folic acid हमें quantity, जो उसकी dose होती है वो होती है 400 micrograms. Ideally हम ये कहते हैं you can start it 3 months before planning pregnancy. और इसमें कोई एज बार नहीं है, आप किसी भी एज पर इसे शुरू करें, चाहे आप 28 ईयर्स पे कंसीव करने को प्लान कर रहे हैं, चाहे आप 38 ईयर्स पे कंसीव करने को प्लान कर रहे हैं. देन कम्स द हेल्दी डाइट एंड योर BMI. BMI मीन्स हमारा जो बॉडी वेट और हाइट रेशियो हम लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और ये इम्पॉर्टेंट खाली वुमेन के लिए नहीं है, ये आपके पार्टनर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, because BMI does affect how we conceive. BMI does affect ovulation. Ideal BMI हम कहते हैं 25 होना चाहिए हमारा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है, then by doing the exercise or by having the right nutrition, we can try and curtail it down. Now when I talk about nutrition, I always emphasize here, nutrition doesn't mean dieting. Please do not try to lose your weight
by dieting. It has to be the balanced food that we are taking. For example, start taking a lot of fresh fruits, vegetables. Cut down on your carbohydrates, जैसे कि हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, पिज्ज़ा है, चाउमीन है, बर्गर्स हैं, इन सारी चीज़ों में कट करके. And simultaneously, we must be exercising. It is very, very crucial before we plan pregnancy. Lifestyle is very busy nowadays for working women. They have to manage the home, they have to manage the family. Mostly हम nuclear families में रह रहे हैं. Please take out at least 3 to 4 days in a week for yourself. It is very, very important. चाहे आप morning में वो time निकालें, चाहे evening में. Any kind of exercise would help, whether it is running or jogging or yoga. And again, about smoking and alcohol, I think again that's very important when it comes to the male partner and female partner. बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, so we should try and stop it if possible. स्मोकिंग भी और अल्कोहल भी, दोनों का ही डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे स्पर्म्स पे भी और हमारे एग्स पे भी. स्मोकिंग एंड अगर कोई पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, कर रहे हैं, हमेशा मैं उनका सीमन एनालिसिस कराना चाहूंगी, बिकॉज इट डायरेक्टली कैन अफेक्ट द स्पर्म्स. What about the nutrition? Like we are drinking Coke, whether it is soft drink we are drinking, चाहे वो Coke है, चाहे वो diet Coke है, they do affect the fertility. I'm not saying one should try and cut it down or one should try and stop it. एक तो इससे empty calories मिल रही है, and we do have some evidence to suggest that it can affect the sperm and the egg quality. It is not a robust evidence, लेकिन है. Then comes the stress levels. Health में stress बहुत important है. There is a direct evidence कि जो stress level है वो हमारी ovulation को affect करता है directly, because stress is directly related to the hormones in our body, and hormones indirectly affect the ovulation. Now it's easier said than done. हम कह देते हैं stress मत लो. Stress तो हर field में है, चाहे वो मेरी field है, चाहे वो आपकी field है. But I think it is more about conditioning mentally, preparing ourselves mentally, how we can try and reduce it. Think about it. हम किन किन चीज़ों का डेली रूटीन में स्ट्रेस ले रहे हैं, हम वर्क का स्ट्रेस ले रहे हैं, घर की ग्रॉसरीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, एंड हाउ वी कैन प्रायोरिटाइज थिंग्स इन आवर लाइफ. सो आई थिंक दैट इज टू डू विद अवर प्री कंसेप्चुअल हेल्थ. सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले अपनी फिटनेस को बेटर करें. Now it comes to pre-conceptual health conditions. एक health कई हम लोगों में कई health conditions exist करती हैं. The most important है कोई भी medical conditions है. It is important that you should see your gynecologist and take her advice. Go to her pre-conceptually. Now the things that I'm talking is like diabetes, like thyroid issues, like hypertension. We may be on drugs like anti-anxiety medications. आजकल awareness बहुत ज़्यादा है. We all acknowledge अगर हमें anxiety issues, panic attacks हो रहे हैं, and it's good that we see psychologists or we see psychiatrists. But if you are on these medications, you must see your gynecologist. We would like to, because they have direct impact again on pregnancy. डायबिटीज़ के लिए भी, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो हम स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, जैसे कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं. अगर डायबिटीज़ कंट्रोल है तो हम आपके लेवल्स करा के देखेंगे कि लास्ट 3 मंथ्स में आपके शुगर लेवल्स कैसे रहे हैं. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेम विद एंटीडिप्रेसेंट्स. इफ़ यू आर ऑन मेडिकेशंस, प्लीज सी योर गायनेकोलॉजिस्ट और योर साइकाइट्रिस्ट. Please do not stop your medications thinking कि now I'm planning pregnancy, मैं anti-anxiety drug पर हूँ, it's going to affect the baby. No, there are some medications which we can still continue, and we can continue in pregnancy also if need be. So when I was in London, I was also working in collaborations with psychologists as a perinatal mental health specialist, as an obstetrician. So I used to do specialist clinic with the women who have mental health issues and who are planning pregnancy. So I can assure you by saying कि हमारे पास medications हैं ऐसी जो आप pregnancy से पहले और pregnancy में and delivery के बाद भी safely ले सकते हैं, because on balance risk of not taking will affect you mental health more than if we give you. So in these conditions benefits are certainly more. So please don't get scared and stop it.
Now the role of vaccinations. There are certain vaccinations जो हमें हमारे को लेनी चाहिए. For example, MMR, mumps, measles and rubella. It's very important. जब आप pre-conceptually देखेंगे, हम एक टेस्ट कराते हैं रूबेला. रूबेला is a virus और इसका हम इम्यूनिटी चेक करते हैं आपकी बॉडीज में. You should be immune. अगर कोई immune नहीं होता, then we would ask you to take vaccination of rubella. Rubella is a nasty virus. It's like a flu, जो कि हम सबको होता ही है कभी ना कभी. More than 90% of women will have had it when they are not pregnant, which is good. लेकिन अगर ये infection हम pregnancy में encounter करते हैं, especially first 3 months, then it can affect the baby. So we always like to check it pre-pregnancy. So we check for your thyroid levels because thyroid also play a very important role in pregnancy. So these are the basic tests. हम diabetes check करेंगे, हम आपके thyroid levels check करेंगे, हम rubella check करेंगे. Now, I think, so apart from that, we will check your egg quality, we will check your sperm quality. हम आपका एक basic ultrasound scan करा के देखना चाहेंगे that आपका uterus, आपकी tubes, आपकी ovaries, ये सब ठीक है कि नहीं. I think इसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी एज क्या है. बहुत सी यंग गर्ल्स आके, यंग एंटरप्रेन्योर वर्कर्स, हेल्थ केयर, दे जस्ट कम एंड आस्क, मैम राइट एज क्या है कंसेप्शन की, व्हेन शुड आई प्लान, मेरा करियर बहुत पीक पर है या मैंने अभी अभी अपना पढ़ाई खत्म किया या अभी अभी मुझे प्रमोशन हुआ है एंड आई कैन नॉट प्लान, या आई हैव जस्ट गॉट मैरिड एंड आई वांट टू एंजॉय लाइफ फॉर 2-3 years बिफोर आई एंटर इनटू ऑल दैट. वेल, अगर मैं हम एज की बात करेंगे और एविडेंस की बात करेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी जान के. वी से ट्राई एंड हैव, one should have baby before 25. Our fertility is the best, but is it realistically possible in today's world? Not really. 25 pe to we are probably not even married, we don't even have partners, we don't even know who we need to settle with. So now अगर मैं अब एज की बात करूं, I think what is important to know is कि women की एज important होती है fertility के लिए. With age our eggs quality start declining. We are born with limited egg reserve. जब हम born होते हैं, ऐसा कहा जाता है around 6 lakhs eggs होते हैं हमारी body में and then they start declining. So it is predestined in a girl's body. वो born ही eggs के साथ होती है. Generally speaking, 35 के बाद fertility काफी decline होनी शुरू हो जाती है. Not that I'm saying कि 35 तक हमें रुक जाना चाहिए. As I already said, हमारी best fertility 25 से पहले होती है. But certainly हमें, whenever we find our partners and we know we want to settle with, and at that time, whether we are 30, 28, 32, we should start thinking कि हमें अगर child चाहिए अपनी life में, then what would be the right time? Trust me, careers बनते रहते हैं. There will be never a time in our life जब हमें लगेगा now I'm settled, my career is done, because there are always ambitions and we want to do more and more. We are all career oriented and ambitious women here. So, but however, it is important for you to know that egg quality is declining very very slowly after the age of 25 और 35 तक तो definitely हो ही जाना चाहिए. Now, is there a miraculous test जो मुझे ये बताएगा if I know my egg quality today तो कितने साल तक मैं safe हूँ? The answer is no, because things are changing, our lifestyles are changing. I can do the quality of eggs check today and I can tell you whether you are fertile or not and you should plan or not, but what I can't tell you is down the line in 2 years आपकी fertility कितनी होगी. दूसरा, the proof of fertility is pregnancy. This is my famous line which I tell to all my patients. Unless you try, I don't know how fertile you are. Eggs तो ये तो हमारे को एक objectivity दे रहे हैं. हमें कितने टाइम खुद से ट्राई करना चाहिए? द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि बिफोर आई कम एंड सी यू मैम, मुझे नेचुरली कितने टाइम ट्राई करना चाहिए? जनरली स्पीकिंग वी से इफ आई गो बाय बुक एटलीस्ट 1 साल आप ट्राई करें और ट्राई करें फर्टाइल पीरियड में, और फिर अगर इश्यू है तो आप हमसे मिले. However, again I would correlate this to age. Suppose कोई 33-35 years पे ट्राई कर रहा है, I don't think so I would want to lose 1 year. And this, again, the stress levels I have seen become very high at that age. We want to see results in month or 2. But I at least say try for 6 months, try for 4 to 6 months, give yourself good time.
We do test your egg quality by 2 tests, FSH levels and AMH levels, जो हमें आपका egg reserve और egg quality बताते हैं. But that doesn't, and even if your periods are regular, that is not guarantee कि हम first cycle में ही pregnant हो जाएंगे. One has to give time to the body, one has to stay calm, and one has to try during those 4 to 6 months. Next question is fertile. Now हमारे पास इतना time नहीं है. Both husbands and wife are working. They are prolonged working hours. What is the best time? What is our fertile period? Now that is important. How do we find out our fertile period? It's very, very important to know. In a regular cycle of 28 to 30 days, we should know जो ovulation होती है, जो egg बनता है, वो period के 14 days पहले बनेगा. And the first day of period के 14 days पहले. So अगर मेरी 28 days cycle है और let's say मेरा आज period first को आया है और next period 28 को आना है, तो मेरी ovulation somewhere around 14th of that month होगी, right? That is the time my body will produce eggs. That is the most fertile time. उस टाइम के 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद का fertile period हम मान के चल सकते हैं. और इन दिनों it is important कि हम at least every other day physical contact रखें अपने partners के साथ. That is important, right? ऐसे ही suppose किसी की cycle 35 days की है, how would you calculate your fertile days? Subtract 14 days from the first day of your period and go back, right? So suppose अगर हमारा 35 days cycle है, तो हम उसमें से 14 days माइनस करेंगे अपना फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से और पीछे जाके देखेंगे 14 दिन पहले कितने थे. उस दिन हमारी रफली ओवुलेशन होगी. अगेन यू गो 4-5 days अप एंड डाउन और जो भी आपके 8-10 दिन का वो टाइम है, हैव इंटरकोर्स एवरी अदर डे विद योर पार्टनर. और क्या तरीके हैं जानने के कि मेरा बेस्ट डे कौन सा है? ओवुलेशन किट्स भी आती हैं आजकल मार्केट में, उससे भी हम पता कर सकते हैं. Then there is something called as basal body temperature, जो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है जब बिल्कुल ओवुलेशन होनी होती है, वो 0.5 to 1 डिग्री बढ़ जाता है. अब ये चीज़ें बहुत एब्सोल्यूट नहीं होती हैं. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स हाउ वी कैन फाइंड आउट. किसी को पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा लेने से. some women are more aware, some women may not find out, but उससे भी हमें पता चल सकता है. Last but not the least is cervical secretions. आपने कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि मिडिल साइकिल में कभी कभी लगता है वी आर फीलिंग लिटिल बिट मोर वेट. ऐसा लग रहा है सिक्रीशंस हमारी लाइटर हो गई हैं क्योंकि वो थिन हो जाती हैं सिक्रीशन. अगेन डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट कि अगर आपको नहीं पता चल रहा या नहीं है, दैट डजंट मीन ओवुलेशन नहीं है. लेकिन अगर किसी को थिन लाइट सिक्रीशन लगती है मिड साइकिल में, दैट इज नॉट अ डिस्चार्ज, इट मीन्स प्रोबेबली यू आर ओवुलेटिंग. सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने फर्टाइल डेज पता होने, अपने सिक्रीशंस के बारे में और अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर के बारे में. पहले मैं शुरू करना चाहूंगी. नेहा अग्रवाल पूछ रही हैं. She has written about the fact that she has, and ये आजकल मुझे लगता है कि every second woman and so many people, so many women I know, they talk about PCOD, PCOS. This is an issue, and she's saying that my egg size is 5 and medications ले रही हैं, doctors recommended medications हैं, but I want to know that are medication enough? What should she be doing? I think इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है. नेक्स्ट सेशन में मैं PCOS ही कवर करने वाली थी बताने के लिए, जो कि मैं डिटेल में बताऊंगी. इसमें PCOD बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट करती है. आई एम होपिंग कि नेहा की फॉलिकुलर मॉनिटरिंग चल रही होगी उसके गायनेक के साथ. PCOD के अंदर ऐसा नहीं है कि हम खुद से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, हम बिल्कुल हो सकते हैं. द इश्यूज इन PCOD ही इसकी कभी कभी ओवुलेशन नहीं होती है और साइकिल्स इतने इरेगुलर होते हैं कि अपना बहुत मुश्किल होता है पता करना फर्टाइल डेज कब है. So what I would suggest to her is that she should be under a gynecologist or a fertility consultant, जिससे कि उनकी proper follicular monitoring हो, स्टडी किया जाए कितने follicles बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम medications को titrate कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं. And then there are different steps into it. PCOD में कभी कभी bodies are very resistant. They may not
on to just milder, older medications. तो फिर उन्हें injections की help से stimulate किया जाता है. And either people conceive naturally by just stimulating with medications. कभी-कभी उन्हें IUI, intrauterine insemination की जरूरत पड़ती है और कभी-कभी IVF. स्नेहा, मुझे नहीं मालूम अभी कि आप किस स्टेज पर हैं, और but all I would say is don't lose your hope. PCOD does not mean infertility. It just means that we have to work together and figure out what medications and things will work best. And my best wishes are with you, Neha. Sweetly Chaudhary है Facebook पे हमें देख रही हैं. इनका question है that if somebody is suffering from mild PID, then can we conceive? Can pregnancy be planned? एक inflammatory disorder के बारे में पूछ रही हैं. हाँ, so sweetie, mild PID बहुत ही subjective term है. मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्रासाउंड देख के बता दिया जाता है, जो मैंने देखा है कि आपको पीआईडी है, विच इज काइंड ऑफ नॉट द राइट थिंग. अल्ट्रासाउंड में अगर फ्लूइड हमें दिखता भी है पाउच ऑफ डगलस में, दैट्स नॉट नेसेसरीली पीआईडी. पीआईडी की फुल फॉर्म है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, राइट. आइडियली पीआईडी का कंफर्मेशन होता है जब हम स्वॉब्स करते हैं और उसके अंदर हमारे को पता चलता है क्लीमीडिया या गोनोरिया जैसा इन्फेक्शन हुआ है, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अगर पीआईडी पास्ट में होता है. पीआईडी डज नॉट मीन इनफर्टिलिटी. पीआईडी से इनफर्टिलिटी तभी होती है अगर बाई चांस उसने हमारी ट्यूब्स को अफेक्ट कर दिया है और ट्यूब्स इन्फेक्टेड हो गई हैं, जिसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, या अंदर हमारी बॉडी के बिकॉज ऑफ पास्ट इन्फेक्शन सब कुछ एडहेजन्स हो गए हैं, चिपक गया है. देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज HSG, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी. इसको कई लोग डाई टेस्ट भी बोलते हैं. तो जब हम फर्टिलिटी के लिए आगे आपको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये टेस्ट ज़रूर करा के देखते हैं कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं है. अगर आपकी ट्यूब्स ओपन हैं और बाकी सारे टेस्ट हार्मोनल ठीक है, then I will not be worried at all. But PID का मतलब infertility या subfertility नहीं. It is a very subjective term that nowadays is getting used. I think इसका थोड़ा misuse भी हो रहा है term का. Okay. Janki Mehta is joining us on the webinar here, and she's asking how much should we wait for planning conception or conceiving after taking the COVID vaccine? Right. So इसका अभी कोई हमारे पास concrete evidence नहीं आया है. However, COVID vaccine एक तो live vaccine नहीं है, which is a good thing. So it should not really affect the pregnancy planning. बट जो भी रिकमेंडेशंस या जो भी सजेशंस हमारे पास आए हैं कोविड, क्योंकि ये 2 हम डोजेस ले रहे हैं, कोविड वैक्सीन लेने के आप 1 मंथ के बाद प्लान कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ लाइव वैक्सीन. इट इज द रूबेला वैक्सीन जब हम लेते हैं उसके बाद हमारे को 3 मंथ्स वेट करना चाहिए, बट कोविड के बाद यू कैन प्लान आफ्टर 1 मंथ. Okay. Amod is asking, Amod Kumar पूछ रहे हैं, how to improve immature follicles in the ovary? Can you repeat that question, Megha? How to improve the immature follicles? Immature follicles अगर आपके बन रहे हैं, so my understanding would be कि उनका size grow नहीं कर रहा है, उसमें आपको थोड़ी assistance की जरूरत पड़ेगी from your fertility specialist or your gynecologist. We would have to probably give you injections during the cycle to pump them and boost them to enlarge in size. So you would need help अगर आपके follicular monitoring में एक particular size तक वो नहीं जा रहे हैं. Right. Now we've got a doctor writing, and Dr. Narinder Taneja is writing, what is the role of high dose of primrose oil in pre-conceptual stage? You have not mentioned about this. He says, Dr. Narinder Taneja is saying, the chairman of IMAAMS Haryana. High dose of primrose oil का not that I am aware of much role. कि उसका ज़्यादा रोल है कंसेप्शन के अंदर. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल या जो हम नाइस गाइडलाइंस NHS के थ्रू देखते हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस, द मेन रोल इज ऑफ फोलिक एसिड सो फार. Folic acid is vitamin B जो हमें pre-conceptually, because it helps, it prevents the congenital malformations from happening. Okay. There are some questions that are also coming anonymously. Please feel free, if you are writing a question that you want me to take without your name, just write, take this question anonymously. I will withhold your name. Writing in, my wife's prolactin is little high.
we are not able to conceive due to, is it that we are not able to conceive because of this reason? It may be one of the reasons. Prolactin levels should be normal because prolactin levels ovulation indirectly affect करते हैं. If they are high, we can start you on a medication called as capgulling, depending on how high it is, and there is a regime of this medication. और उसके बाद I am sure आपको ovulation better हो जाएगा. So please do see a gynecologist if your levels are high. Okay. Just a follow-up of this question, that prolactin range 28 बता रहे हैं Dr. Agarwal. So is that a high level? Is it affecting conception? नहीं, prolactin up to 30 is okay. I would normally not give treatment अगर levels 30 से कम है. So अगर 30 से कम है, then please, I don't think that's an issue. That should be an issue. Okay, this one has come anonymously as well. I have gone through 4 to 5 IUIs and 2 IVFs, but no result. The doctor says this is unexplained infertility issue. What can I do? Yeah, it's very sad, and unexplained infertility भी एक entity होती है. Just for viewers' sake, and unexplained वो होता है जब हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, हस्बैंड के भी, वाइफ के भी. However, उसके बाद भी हम कंसीव नहीं कर पाते हैं. 10 to 15% लोगों में ऐसा पाया जाता है. I think patience is a virtue. I know it is very disheartening जब हम इतने IUIs और IVF ले लेते हैं. But the answer is you keep trying. See your gynecologist, see your IVF. There are different regimes they try. There even जो medications दिए जाते हैं उसके भी different regimes होते हैं. I'm hoping कि आपके follicles अच्छे बन रहे हैं और egg retrieve हो रहे हैं. But इसके अलावा the best thing would be try. Give yourself break. आपने काफी cycles ले लिया IUI and IVF. Because sometimes I have seen even naturally people can conceive. Unexplained infertility में I would never say you cannot conceive. It's just that something is not right happening between, when the fertilization is happening. But you may have to give another chance to have IVF. Yeah, so anonymous attendee, there is a lot of prayer and positive vibes that we are sending your way. I know, like Dr. Deepika said, that it can be very, very taxing emotionally as well. So we're just hoping that things turn around for you. And take a break. This is not the only thing. I would say, being another woman on this path, I would say that do things that make you happy. And while you are trying all of this, I think it's also important that your mental health and your happiness is also in place. So just like a small nugget from my side, but yes, a lot of positivity coming your way. I think the bit that is left now is I wanted to touch a little bit about MEGA, non-consummation of marriage, and again then PCOS. ये दो चीज़ों के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी. Occasionally I see, I think I see some couple who come and they do talk about that they have got married recently and they're trying, but for some reason it's not getting, the penetration is not happening. Or some women are not, feeling very uncomfortable when the partner is trying to have physical contact. It's again important. ऐसा situation है, doesn't think कि आप pregnant हो ही नहीं सकते हैं या ये possible नहीं है. There are lots of techniques. There is sometimes help needed from psychologists. There are terms called as vaginismus. Vaginismus means the fear of having physical contact, which vaginismus is to do with the vagina, with the woman. So normally with psychologists, with counseling, sometimes by using the vaginal dilators, these things can be overcome. And I'm really glad that nowadays women are aware, they want to seek help. So please go and see your gynec. There are lots of solutions for that. Same with the men also. Agar penetration is an issue, then they can see the urologist also and psychologist. There should be combined, both of them are equally important. Now we move on to polycystic ovaries. Now polycystic ovaries has become like a pandemic. It has become so common nowadays. It's to do with the lifestyle, it's to do with the stress level. It is a condition जिसके अंदर हमारी ovaries में small ring like follicles बन जाते हैं and they lead to the hormonal imbalance in the body.
The most common thing that we see is कि periods बहुत irregular हो जाते हैं. Sometimes there is absolutely no pattern. कभी periods 40 days में आएंगे, कभी 50 में, कभी 3 months, कभी वो नहीं आते बिना withdrawal के. Polycystic ovaries does not mean infertility. Please make sure, जब आप बहुत ज़्यादा Google पढ़ते हैं तो आपको लगता है मुझे PCOD, अब मैं pregnant हो ही नहीं सकती. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Most of the time women fall pregnant और उनको मालूम भी नहीं होता कि उन्हें PCOD है. However, there is some association कि अगर किसी को PCOD है तो उनको कभी कभी इश्यूज हो सकते हैं when they plan, क्योंकि उसमें ओवुलेशन होने में दिक्कत होती है PCOD के अंदर because of the hormonal imbalance. जिन लोगों को PCOD होता है उनके लिए सबसे ज़रूरी है अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना. एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन रिजॉल्व्स 50% ऑफ द इशू. हमें ओवुलेशन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है when we start having good nutrition and when we're doing regular exercise. If you are a young girl, and if you're listening today, or even if you have recently got married and you're planning pregnancy and you know you have PCOD, stay positive. As I always say, start doing exercise, start maintaining your lifestyle. आपका 50 to 60% chance है automatically ovulation हो जाएगी. अगर आपने ये सब किया है और तो उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, देयर आर सम मेडिकेशंस व्हिच वी कैन नेचुरली स्टार्ट. फोलिक एसिड तो आप ले ही रहे होते हैं. कभी कभी हम एम्पेरिकली एक एंटी डायबिटिक ड्रग ग्लाइकोमेट या मेटफॉर्मिन करके स्टार्ट कर देते हैं. इट हेल्प्स इन सम ओवुलेशन, इट हेल्प्स सम वुमेन. ये सारे डिसीजंस आपके गायनेक लेंगी. देयर आर सम मल्टीविटामिन आती हैं जिसके अंदर कोलिन होता है, हम कभी कभी वो भी शुरू करते हैं टू असिस्ट यू विद द ओवुलेशन. However, ये आपकी हिस्ट्री डिस्कस करके आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे. बट माई टेक होम मैसेज फॉर वुमेन विद PCOD वुड बी प्लीज डू गुड एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन. ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है PCOD में. अगर उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती, then of course we can give you medication to help you with ovulation or injections if need be to help you. But PCOD does not mean infertility. The crux here is in the entire discussion. What I want to tell Megha today viewers is कि जब हम pre-conceptual planning करते हैं, what I want them to know is हमें अपने माइंड से एक ये ब्लॉक निकालना है कि मेरे पीरियड्स बहुत रेगुलर हैं तो मैं तो फर्स्ट टाइम में ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, या बहुत इरेगुलर है मैं तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाऊंगी. ये दोनों ही थॉट प्रोसेसिंग ठीक नहीं है, राइट. फर्टिलिटी इरेगुलर पीरियड्स में भी इमीडिएटली हो सकती है और स्पॉट ऑन पीरियड में भी टाइम ले सकती है. This is about eggs and sperms. This is about the best quality eggs and sperms meeting together when we are planning. Stress free रहना, mentally calm रहना, और जब हम प्लान कर रहे हैं रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना. We just have to enjoy the way we were. We just have to remain stress free the way we used to be. It should not become a task. जब ये task बन जाता है तो automatically stress आ जाता है. And it does happen. And अगर नहीं भी है, then we have so much of technologies and resources today that we can always help you and assist you to fall pregnant. But ये पता होना कि एज इम्पॉर्टेंट है, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, राइट टाइम पे अपनी फैमिली प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. करियर्स होते रहेंगे और लाइफ चलती रहेगी, बट प्लीज डू प्लान एट राइट थिंग एट द राइट टाइम. दैट वुड बी माई मैसेज. And I want everyone to, stay fit on World's Health Day. I hope मेरा session useful रहेगा. There will be some messages for them. And yeah, just stay positive and stay happy. मुझे पता है कि it's for doctors, it's a busy time. Every day is a busy day. So you took out time for us. It means a lot, Dr. Deepika Agarwal. Thank you so much, and best wishes for World Health Day from Onlymyhealth. Thank you so much, Megha. Thank you, and my best wishes with you all and all viewers. Thank you. Have a good day, everyone.